Good morning, friends. So today's topic is female reproductive system. So it's for medical entrance exams, NEET exam preparation. It will also cover your CBSE board exam preparation. So now let's come to the topic. Okay. So you can see this is the sagittal section of the female reproductive system, and the person is cut in between, and you can see various parts of the female reproductive system. So the first part will start with ovary. So ovary, you can see this yellowish colored body is an ovary. Ovary is around 5 centimeters in dimensions, 5 into 3 into 2 centimeters in dimensions, and its shape is just like uh, almond shaped. Okay, बादाम का जो shape होता है उस तरह का shape होता है. And ovaries, they are located in the abdominal cavity, right? So let's first okay, so after that ovary, you can see the second part is the fallopian tube. Fallopian tubes also called oviducts, right? So this part is uh, that is fallopian tubes or oviducts. So so this is our fallopian tube. Now let's third part is uterus. So you can see this pouch like structure. This is the muscular sac. Okay, bag जैसा structure होती है, and that is called uterus. And the next part is the vagina. This is the vaginal tube. Okay, this is the opening of the vaginal tube. We will discuss each and every part in detail one by one. So the so in addition to that, the female reproductive system also includes the accessory glands, right? Glands, and the breasts, the mammary glands, okay, are also part of female reproductive system. And so let's see one by one. So first part is ovary, right? So let's so you can see that ovaries are suspended in the female in the abdominal cavity of the female, and the ovaries attached to the uterus with the help of a supportive connective tissue called ligament, right? So this white colored part, this is ovarian ligament. Okay, this is also called as narrow ligament or ovarian ligament. And second ligament is, you can see, round ligament. Round ligament is this one. So a round ligament attaches the uterus to the wall of abdominal cavity, right? And so there is also one another ligament, so that is called broad ligament or mesothelium. So that we will discuss ahead later. Okay, so broad ligament, mesothelium is in between this part and this part. Okay, so that will come ahead. So now first let's see about ovary. So there are two ovaries basically. There is a single pair of ovary in the female reproductive system. So now let's see about the ovary. So you can see this is the left side ovary, and this is the another ovary, right? Left side, and this is right side. And here this part of ovary is already cut into a section, and this is the intact ovary. And yeah, so I told you ligament. Okay, so this is the third ligament. Okay, third ligament is called broad ligament. You can see this is the ovarian ligament is narrow ligament. Okay, this is ovarian ligament. It's it is attached to the ovary. Ovary attaches to the wall of uterus with the help of ovarian ligament or narrow ligament, right? And broad ligament is this one. Sorry, this round ligament. Okay, this one suspensory ligament. Okay, this is the round ligament or suspensory ligament. It attaches to the wall of abdominal cavity. And third, I told you this is a broad ligament. This entire structure is white part. This sheet-like structure is called broad ligament. Okay, it is also called mesothelium. Mesothelium. So mesothelium has two parts. Okay, let me type what is mesothelium. So just 1 minute. Okay, so mesothelium is broad ligament, right? And this has two parts. So the upper part, okay,
the part which attaches the fallopian tube. Okay, these are the fallopian tubes, you can see, and the fallopian tubes are hold, they are held in place with the help of this ligament. Okay, this part of ligament is called mesosalpinx. Okay, mesosalpinx. Okay, so this is the part between ovaries and the fallopian tube. Okay, यानी in brief, जो part मेजोवेरियम का वो पार्ट जो fallopian ट्यूब्स को होल्ड करके रखता है उसको बोलेंगे mesosalpinx, और ब्रॉड लिगामेंट का वो पार्ट, मेजोवेरियम का वो पार्ट जो यूट्रस और ओवरीज के ये वाले नीचे वाले पार्ट में होता है उसको बोलेंगे मेजोमेट्रियम, राइट, मेजोमेट्रियम, राइट. So mesosalpinx and mesometrium, they are two parts of the broad ligament or over this. Okay, now let's come to the structure of ovary, right? So ovary, let's see in detail. Okay, so next slide. Okay, yeah, so this is the section of ovary, okay, and in cross section of ovary you can see that the ovary has an outer wall. You can see this is the outer wall, right? So this is the wall of ovary, and the wall of ovary is composed of a basement membrane, right? Basement membrane. So outside is a basement membrane, and then inside the basement membrane is a layer of cells called germinal epithelium. जैसे हमने टेस्टिस में देखा था सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की जो लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की होती है और उसमें स्पर्म मदर सेल्स होती हैं. सो लाइकवाइज ओवरीज आल्सो हैव जर्मिनल एपिथेलियम, और ओवरीज के जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होंगे? एग मदर सेल्स. ओके, दे आर कॉल्ड oogonia. Egg mother cells are called oogonia. Okay, so oogonia is plural, oogonia means singular. Okay, let me type. Okay. Oogonium is egg mother cell. Okay, egg mother cell से ही finally ovum बनेगा, right? Egg बनेगा, mature egg बनेगा, right? So you can see okay, so germinal epithelium is composed of egg mother cells, oogonia, और germinal epithelium के अंदर होगा a thin layer of connective tissue. Okay, so that is called as tunica albuginea. Okay, this is tunica albuginea. So tunica albuginea is a thin layer of supporting connective tissue, white fibrous connective tissue, and that supports the wall of ovary. So wall of ovary has three parts. You can see basement membrane, germinal epithelium, and tunica albuginea. This is the wall of ovary. Now let's come to the inside of the ovary. So the ovary can be divided into two parts. The outer peripheral part, जो peripheral part है, बाहर वाला part, इसको बोलेंगे हम cortex, right? So cortex ये वाला part जो है ये आपका cortex होगा, और cortex के जो अंदर वाला, cortex को छोड़ के जो अंदर वाला बाकी का part है, that is known as medulla. Okay, medulla. So medulla is this entire central part of the ovary is called medulla. So ovarian cortex and ovarian medulla are two parts of ovary, and now we'll study what's there, other things in the ovary. And you can see the cortex has primordial cells. Okay, primordial cells. Okay, so these are they are basically, from these cells arise the egg mother cells. Okay, they give rise to oogonia. Okay, egg mother cells, and so there are so many primordial cells you can see in the cortex, and in the medulla there are various structures called follicles. You can see these are follicles in various stages of development. Okay, और follicles की अपनी अपनी stage होती है. Okay,
primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, mature follicle, or graphene follicle, etc. And we'll discuss these one by one in detail, the follicles. So ovaries also have, you see, these are the blood vessels and nerve fibers. So veins, arteries, okay, are visible here. So nerve fibers are there. So all these things are embedded in the connective tissue inside the ovary. So ovary is filled with the connective tissue, और उसी connective tissue में ये सब चीजें embedded हैं, उसी में रखी हुई हैं, right? Now let's see in detail the follicles, ovarian follicles. Okay, so so this is the primary follicle. तो प्राइमरी फॉलिकल्स केवल बर्थ से पहले ही बनते हैं, राइट? बर्थ के बाद कोई प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनते हैं, राइट? नो मोर प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ, राइट? सो यानी फीटस में ही बन जाते हैं, राइट? मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद बर्थ होता है, और बर्थ के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स डिग्रेड होने लगते हैं, कुछ प्राइमरी फॉलिकल डिकम्पोज होने लगते हैं, राइट? और प्यूबर्टी तक डिकम्पोज होते रहते हैं, राइट? प्यूबर्टी होती है एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, सो इट इज फ्रॉम 11 years of age to 12 years of age, in which the menstrual cycle starts, right? So प्यूबर्टी आते आते यानी प्राइमरी फॉलिकल्स का जो नंबर है वो केवल 60,000 से 80,000 ही बचता है, राइट? सो ईच ओवरी has only 60,000 to 80,000 primary follicles in each ovary at puberty, right? And no more primary follicles are added after birth, right? So that's one point. और तो ये जो बर्थ से लेके और प्यूबर्टी तक इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डिग्रेड हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट, सो लेट मी टाइप हियर द नेम. So that is follicular atresia. Okay, it's a degeneration of primary follicle from birth to puberty, follicular atresia. So now let's come to okay, so प्राइमरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर क्या होती है? सो प्राइमरी फॉलिकल के सेंटर पे एक एग मदर सेल होती है, ऊगोनियम होती है, राइट? एंड ऊगोनियम यू नो इट इज सो बिकम्स इंक्रीज्ड इन साइज. ओके, ये आप जो देख रहे हैं कोर्टेक्स में, ये बाहर these are primordial cells. Okay, so they are kind of primordial germ cells, right? And they grow in size, they become primary oocytes, right? And so that they are surrounded by further small cells, right? So these small cells at the outer side and the central cell together they form primary follicle, right? So these तो ये जो आउटर सेल्स होती हैं, उनको उनको क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड ग्रानुलोसा सेल्स, ग्रानुलोसा सेल्स, राइट? और फॉलिकुलर सेल्स. ओके, तो जैसे हमने टेस्टिस में देखा था, तो टेस्टिस हैड लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या था? दे प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, राइट? ऐसे ही ग्रानुलोसा सेल्स प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट? सो फीमेल सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ secondary sex organs and secondary sex characters, right? So secondary sex organs, this I told you in the last class. Okay, they are the organs which are essential for reproduction, although they do not produce sex hormones nor they produce gametes, but still they are essential for reproduction. For example, uterus, right? Vaginal tube, penis, etc. So they are essential for reproduction. So they are called secondary sex organs. And secondary sex characters like mustache, beard, okay, so they are secondary sexual characteristics. They differentiate between male and female. So sex hormones जो होते हैं मेल और फीमेल में क्या करते हैं? They are responsible for growth and development of secondary sex organs and secondary sex characters. So that is about the function of estrogen and progesterone. So
So this is the structure of primary follicle. So primary follicle as a primary oocyte, and the primary oocyte is surrounded by granulosa cells, right? Granulosa cells. Then what happens? Okay, so this is the primary follicle. So at puberty पे हमारे पास यानी काफी सारे primary follicle होते हैं, और जब आपको पता है जब puberty start होती है तो menstrual cycle start हो जाता है females में, and menstrual cycle में क्या होता है? Every month one primary follicle starts growing, starts its development. Okay, so one primary follicle becomes mature follicle, right? और ये अल्टरनेटली होता है, जैसे इस महीने अगर लेफ्ट ओवरी में हुआ तो नेक्स्ट महीने अगले महीने राइट ओवरी में एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होगा मैच्योर फॉलिकल में, राइट? तो तो प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर कैसे होता है? इसके चारों तरफ और ज्यादा फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं. यू कैन सी ग्रानुलोसा सेल्स, दे become, you see these are granulosa cells. Okay, so there's a number increases. Okay, so the size of the follicle increases, so it is called secondary follicle. उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल फिर और ग्रो करता है और टर्सरी फॉलिकल बन जाता है. यू कैन सी दिस द टर्सरी फॉलिकल. सो टर्सरी फॉलिकल में और ज्यादा ग्रानुलोसा सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, राइट? सेल सेंट्रल सेल के चारों तरफ, और इसमें आप देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप जाती है. ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है. ओके, इट इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, राइट? सो फ्लूइड फिल्ड कैविटी फर्स्ट टाइम टर्सरी फॉलिकल में अपीयर होती है. ओके, so tertiary follicles are characterized by fluid filled cavity. Okay, that is called antrum. आप याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है. So the fluid filled cavity is called antrum. Okay, let me type, that is antrum. Antrum, okay, is the fluid filled cavity inside the follicle. So this is present in tertiary follicle. उसके बाद tertiary follicle और ग्रो करता है, you can see, और जो एंट्रम जो होती है वो और बड़ी हो जाती है. यू कैन सी. ओके, तो फॉलिकल का साइज भी बड़ा हो गया है, राइट? और इसमें ग्राउंड सेल का नंबर भी बढ़ गया है, राइट? और एंड यू कैन सी ये जो आपको एंट्रम दिखाई दे रही है यहाँ पे. सो ये जो एंट्रम में जो फ्लूइड होता है, ओके, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड, राइट? और लिकर फॉलिकुलाई, लिकर फॉलिकुलाई. Okay, and so this mature follicle is also known as Graafian follicle. Graafian follicle. Okay, from the name of the scientist, Graafian, name of the scientist who discovered the mature follicle, Graafian follicles, right? So this is the mature follicle. Mature follicle is also known as Graafian follicle, right? And mature follicle has another important structure. So you can see the secondary oocyte, okay, in this there oocyte, okay, at the center. So this oocyte, egg mother cell, it is suspended, it is attached to the wall of the follicle with the help of stalk-like structures composed of granulosa cells. So these stalk-like structures are called cumulus euphorus. It is also important. Cumulus euphorus. Okay, cumulus euphorus. Okay, is the anchor point, okay, anchorage. Okay, stalk like structure जो उसको अटैच करती है ग्राफियन फॉलिकल की वॉल को, oocyte की वॉल से अटैच करती है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड cumulus euphorus, right? So so this entire part, you can say these part and this part, they are part of cumulus euphorus. Okay, so now okay, so इसके हम थोड़ा सा डिटेल में फॉलिकल की स्ट्रक्चर और बता देते हैं यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में लेट्स सी. Okay, so you can see
So primary follicle, you can see this is the primary follicle. So this is at the center there is a primary oocyte surrounded by granulosa cells. Then secondary follicle में you can see that ये जो सेंट्रल सेल होती है, ओके, उसके बाहर एक वो बन जाती है, नॉन सेलुलर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, उसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा इज ए नॉन सेलुलर, सेल्स की नहीं बनी होती है, ओके. और उसके बाहर होती है ग्रानुलोसा सेल्स, ओके. और ग्रानुलोसा सेल्स का यहाँ पे आप एक स्पेशल नाम दे दिया उन्होंने, ओके. जब सेकेंडरी oocyte रिलीज आती है तो उसको बोलते हैं, उसके बाहर जो ग्रानुलोसा सेल्स होती हैं उसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, ओके. तो यानी ये जो सेंट्रल सेल है उसके बाहर दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जोना पेलुसिडा ये नॉन सेलुलर होती है, राइट. और बाहर जो सेल्स होती है ग्रानुलोसा सेल्स, उसको हम बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा, ओके, कोरोना रेडिएटा. एंड उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेरशरी फॉलिकल बन जाता है, इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एंट्रम, और ये बना जाता है क्यूमुलस यूफोरस, राइट. यू कैन सी this entire this stalk and this entire cells, they are called cumulus euphorus, okay. They hold the central cell to the wall of the follicle. Then इसके अलावा जो ये जो फॉलिकल होता है, ओके, फॉलिकल के बाहर भी दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, राइट. और एक जो अंदर वाली होगी उसको बोलेंगे थीका इंटरना, बाहर वाली होगी उसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना. सो थीका इंटरना इज इनसाइड एंड थीका एक्सटर्ना इज आउटसाइड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ the walls of tertiary follicle, right. So theca interna and externa are there. So theca externa basically is kind of connective tissue layer, and theca interna it's a kind of non basement membrane type layer. And next, mature follicle, you can see this is the mature follicle. So तो होता क्या है कि तो जो menstrual cycle होता है आपको पता है 28 दिन का होता है, 28 डेज का होता है, राइट. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स विद ब्लीडिंग फेज, ओके. तो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है, और ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होते ही क्या होता है, एक ओवरी में एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, राइट. और मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, और 14वें दिन तक, 14th डे तक, यानी एक मैच्योर फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है. ऑन 14th डे द मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा, उसकी वॉल ब्रेक हो जाती है. और उसकी जब वॉल ब्रेक हो जाएगी तो मैच्योर फॉलिकल के अंदर जो कंटेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे, यू कैन सी. सो ये जो सेकेंडरी oocyte है, ओके, ये बाहर आ जाएगी, राइट. और इसका जो फ्लूइड है ये भी बाहर आ गया, आपको फॉलिकुलर फ्लूइड भी बाहर आ गया, ओके. सो ग्राफिन फॉलिकल, ओके. सो यू कैन सी इट इज रप्चर्ड, और the secondary oocyte is released out of the graphene follicle, right. ये ओवरी से बाहर भी आ जाता है, ओके. सो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ, यू कैन सी यहाँ पे, तो मैच्योर फॉलिकल, यू कैन सी ये मैच्योर फॉलिकल ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 14th डे होता है, ब्रेक होता है, रप्चर हो जाती है वाल. तो इसके कंटेंट ओवरी से बाहर जाते हैं, ओवरी की वाल से बाहर जाते हैं, यू कैन सी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, release of secondary oocyte from the ovary is called ovulation. It takes place on 14th day of the menstrual cycle, right. So now it's clear, okay. So now let's see what happens, okay. So ये जो बाकी स्ट्रक्चर बच जाती हैं, this part, okay. So this part then converts into a yellow body, okay, yellow colored body. This is called corpus luteum, corpus luteum. So corpus luteum is produced, and it is yellow colored because of a protein called lutein, lutein protein, lutein, lutein. So lutein protein की वजह से इसका कलर येलो होगा. और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. So what happens if the pregnancy takes place, okay. यानी अगर ये सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइज हो जाती है, स्पर्म से कंबाइन करके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. इट विल बी मेंटेन्ड, ओके. और ये क्या करेगी, इट विल कंटिन्यू, इट विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, राइट. तो granulosa cells, okay, of the follicles, okay, they produce estrogen, mainly estrogen, right. And corpus luteum क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, राइट.
Progesterone, it will promote growth of uterus and mammary glands and other secondary sex organs, right? और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम केवल अगले 14 दिन तक ही मेंटेन रह पाएगी, राइट? क्योंकि 14 दिन तो 14th डे ओवुलेशन होता है, बाकी जो अगले 14 दिन बचेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें यानी आगे धीरे धीरे ये फिर डिग्रेड होने लगती है, राइट? और अल्टीमेटली डिग्रेड होके, डिकम्पोज होके ये एक व्हाइट बॉडी में बदल जाती है, ओके? इसको बोलेंगे व्हाइट बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस है, यू कैन सी। सो आपको ये याद रखना है। So corpus albicans is a white fibrous tissue, basically white fibrous body. Okay, it does not produce any hormones, and तो इसको हम white body बोलेंगे, corpus luteum को हम yellow body बोलेंगे, right? So this is about corpus albicans and corpus luteum. Corpus luteum yellow body, corpus albicans white body, white fibrous tissue is there. So that is ओके, तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं सेकेंडरी oocyte रिलीज, ओके, ओवुलेटेड oocyte, सेकेंडरी oocyte बाहर जाती है, ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में आती है। पहले oogoनियम से प्राइमरी oocyte बनती है, फिर सेकेंडरी oocyte बनती है, राइट? और सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, और फिर सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म से कंबाइन कर जाती है तो वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाती है और जायगोट बन जाता है उसके बाद, राइट? और सो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, येलो बॉडी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट part of the female reproductive system. Okay, so ovary we have discussed. So ovary has various follicles at various stages of development during menstrual cycle, and now let's see about okay, so ovary we have discussed. Now next part is oviducts or fallopian tubes, right? So so this is fallopian tube, okay, in section, okay, from here to here, okay. And so this is called oviduct. So oviduct के जो है 4 पार्ट होते हैं, राइट? तो पहला जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है आपका this, okay, this part, okay, this part, you can see this part. So this part is known as infundibulum, okay. So infundibulum ये वाला पार्ट है। तो infundibulum का जो माउथ होता है, ओके, ये जो इसका माउथ है, इसकी माउथ की ओपनिंग जो होती है, इसके माउथ के किनारे पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये यू कैन सी दीस आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सो दीस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्री। ये इंपॉर्टेंट है, फिम्ब्री, कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि जो एग्जाम में आते हैं, ओके। बायोलॉजी में मेन काम यही करना होता है कि आपको क्या पढ़ना है, राइट? ये सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज अगर आपने ये सॉर्ट आउट कर लिया तो आपका यानी काम बहुत आसान हो जाता है, ओके। बायोलॉजी इज नॉट cracking NEET is not a very tough job, okay, if you know what to read and what not to read, okay. तो आपको जंक इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करके रख देनी है, अलग करनी है, आपको केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आती हैं वही हम आपको मैं बोल रहा हूँ, ओके। और वो आपको यानी नोट करके याद रखना है, ओके। देन इट्स वेरी इजी टू क्रैक नीट। तो फिम्ब्रियाई जो है इनका क्या काम है? कलेक्ट करती हैं, फिंगर से हम यूज करते हैं कलेक्ट, किसी को कलेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही फिम्ब्रियाई दे कलेक्ट द सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ओवरी। जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ओवुलेशन होता है, तो उस ओवम को सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करती है फिम्ब्रियाई, ओके, ताकि ओवम इधर उधर ना जाए एब्डोमिनल कैविटी में, ओके। और यहाँ से जैसे यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकली तो फिम्ब्रियाई उसको कलेक्ट करके अपने अंदर ऐसे fallopian tube की तरफ ले जाती है, राइट? और so that is function of fimbriae. They collect the ovum, okay, released from the ovary. Now, so next part of oviduct is called ampulla. So this part is called ampulla. ये वाला पार्ट जो है इतना पार्ट। सो एम्पुला जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, लॉन्गेस्ट पार्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट, ओके। सबसे चौड़ा और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और उससे अगला पार्ट है फिर इस्थमस जो है शॉर्ट पार्ट होता है, ओके, और शॉर्टेस्ट होता है और नैरो होता है, ओके, शॉर्ट नैरो। सो एम्पुला लॉन्ग वाइड, इस्थमस नैरो एंड शॉर्ट, राइट? एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो
इधर से आप, इधर से क्या होता है, इधर से जैसे आप देख रहे हो ओम आ रहा है, ओके, इधर से ओम आता है ऐसे, और ओम ओम इसको यहाँ पे आके यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। इधर से स्पर्म्स ऊपर आते हैं, स्पर्म्स आएंगे और स्पर्म्स यहाँ पर पहुंचकर ओम से कंबाइन कर देंगे, जायगोट बन जाएगा, ओके, फर्टिलाइज हो जाएगा, ओके। सो ये कहाँ पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन? इस एम्पुला और स्थमस के ज्वाइनिंग पॉइंट पे, ओके, यानी एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे होता है फर्टिलाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्थमस, एम्पुला और स्थमस के जंक्शन पे, राइट, वहाँ पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस। एंड द फोर्थ पार्ट, ओके, ओके, स्थमस आल्सो हैज सीलिया, ओके, सीलिया होती हैं, तो सीलिया क्या करती हैं, जो जायगोट बन जाता है उसको प्रोपेल करने में हेल्प करती हैं यूट्रस की तरफ, राइट, ताकि जायगोट यहीं पे फ्लोपियन ट्यूब में ना इम्प्लांट हो जाए, ओके, वहीं पे डेवलप होना स्टार्ट ना हो जाए, राइट। कई बार क्या होता है कि जो जायगोट बन जाता है लेकिन वो नीचे नहीं आ पाता, राइट, और फ्लोपियन ट्यूब में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक 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 प्रेगनेंसी बोलते हैं उसको। और दिस इज डेंजरस फॉर द मदर एंड सो इट हैज टू बी रिमूव्ड अबाउट इट, ओके। सो दैट इज अबाउट फंक्शन ऑफ सीलिया इन द स्टमस। और उसके बाद ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट जो फोर्थ पार्ट जो होता है ओविडक्ट का, उसको यूट्रीन पार्ट बोलते हैं। यूट्रीन पार्ट बहुत छोटा होता है, वो यूट्रस के कॉर्नर के आसपास होता है, ओके, दो, तो वो ओविडक्ट को यानी यूट्रस से कनेक्ट करता है, तो यू कैन सी ओविडक्ट्स आर कनेक्टेड टू द पाउच ऑफ द यूट्रस, ओके। So that is out oviducts, and oviducts are held in place with the help of a mesovarium. That mesovarium is mesosalpinx, okay, this part is mesosalpinx, right, and it keeps the oviducts in place, okay, hold. Now, so next part of the female reproductive system is uterus, okay. So uterus, this part is uterus, this part is uterus, okay. So uterus, it's a bag like structure, pouch like structure, okay, और इसको इन्होंने यहाँ पे हमने काट के देखा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ अंदर एक खाली जगह है, राइट, जिसका ल्यूमन ऑफ यूट्रस, राइट, और ये यूट्रस की वॉल है, थिक वॉल होती है, राइट। और पहले हम यूट्रस के पार्ट्स देखते हैं, ओके। यूट्रस के यानी 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो डोम शेप्ड होता है, डोम, ओके, जैसे गुंबद होता है उसका जो रूफ होता है उस तरह का, यानी सी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको फंडस बोलते हैं, ओके। फंडस यानी फंडस इज डोम शेप्ड। फंडस जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये डोम शेप्ड होता है, डीओमी डोम शेप्ड। और फंडस के बाद जो कॉर्नर वाला जो पार्ट है, ये वाला यूट्रस का पार्ट, ओके, कॉर्नर पे उसको बोलते हैं कॉर्नवा, कॉर्नवा। और कॉर्नवा के बाद यूट्रस का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा बॉडी ऑफ यूट्रस, ओके, body. So the middle part, okay, this is the main part of uterus, that is called body of uterus. And body of uterus के बाद जो फोर्थ पार्ट होगा उसको बोलेंगे सर्विक्स, ये वाला सर्विक्स पार्ट है, सर्विक्स, ओके। सो सर्विक्स, तो सर्विक्स आप देख रहे हैं, सर्विक्स की जो ये जो ओपनिंग है, ओके, जो वजाइनल ट्यूब में खुलती है, ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस, ओके। और एक और ओपनिंग है ये वाली यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंटरनल ओस, ओके। सो इंटरनल ओस इज द ओपनिंग, ओके, बिटवीन सर्विक्स एंड यूट्रस, ओके, एंड external os is the opening between cervix and vaginal tube. So that is about these two openings. So the diameter of these openings is 1 centimeter in normal times, and during childbirth, during delivery, the diameter of these openings increases to 10 centimeter, okay, ये याद रखना, 10 centimeter यानी increase हो जाता है। अगर diameter बढ़ता नहीं है तो then doctors then they go for cesarean delivery, yeah. So now let's see about the structure of uterus. So you can see the wall of uterus is very thick, okay,
एंड ये 3 लेयर की होती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. सो आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरिटोनियम. ये याद रखनी है. ओके, इनके नाम याद रखने होते हैं. इट इज कॉल्ड पेरिटोनियम. पेरिटोनियम इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर होती है. एंड उसके बाद जो मिडल लेयर होती है वो यू कैन सी दिस मिडल लेयर. दिस मिडल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम जैसे नाम से ही है, इट इज हाईली मस्कुलर. ओके, बहुत सारी स्मूथ मसल्स होती हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स. एंड इसका तो स्मूथ मसल्स का काम होता है कंट्रैक्शन. ओके, तो इसका फायदा क्या हुआ? तो मायोमेट्रियम हेल्प्स, द कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ. ओके, तो लेबर पेन्स होता है तो इसमें यानी यूट्रस कंट्रैक्ट करता है जोर जोर से, तो इट इज बिकॉज ऑफ मायोमेट्रियम. ओके, मसल कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम. सो myometrium, you can see it also has blood vessels and nerve fibers and arteries, veins, right? So okay, so now third layer of uterus, wall of uterus. Okay, the third layer of wall of uterus is called endometrium. Okay, so this is endometrium. Endometrium is composed of gland cells. Okay, so these gland cells produce secretions. Okay, they produce nutritive secretions that provide nutrition to the developing zygote, right? Developing embryo. So they are nutritive. And endometrium के और दूसरा important function है वो क्या है? Menstrual cycle. Endometrium is related to menstrual cycle. तो menstrual cycle में जो changes होते हैं, they are related to endometrium. Okay, endometrium से यानी endometrium ही break होता है. Okay, shedding होती है इसकी और फिर ये फिर से develop होने लगता है. Okay, जो menstrual cycle में changes होते हैं, so they are related to endometrium. ये याद रखना important है. और so that is about the wall of uterus. Okay, now okay, so that's about cervix also we have discussed. Okay, and now let's see about the next part, and that is called vaginal tube. Okay, so you can see this is the vaginal tube, and it is let me show in detail. Yeah, so this is the जो आपने देखा, यू कैन सी ये आउटर यूट्रस है ये. ओके, तो यूट्रस की जो आउटर वाल है ये पेरीमेट्रियम है. मस्कुलर वाल जो मायोमेट्रियम है, और ये अंदर वाला एंडोमेट्रियम है. बाकी जो अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ल्यूमेन ऑफ यूट्रस. और एंडोमेट्रियम में तीसरा फंक्शन क्या होता है? जब एम्ब्रियो डेवलप होके आता है, ओके, इधर से जो जायगोट, फर्टिलाइज जायगोट नीचे आता है, ओके, यूट्रस में आता है, तो इम्प्लांट होता है. एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है इधर, राइट? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है. तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन. एंडोमेट्रियम में 3 फंक्शन है. एक ग्लैंडुलर है, ग्लैंड्स है, ओके, यूनिटेटिव फ्लूइड सीक्रेट करता है. दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस, जो रिलेटेड चेंज होते हैं वो इसी में होते हैं. और तीसरा इम्प्लांटेशन होता है. जो जायगोट डेवलप होकर आ रहा होता है उसे एम्ब्रियो जो होता है वो उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है वो इम्प्लांट होती है. तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होती है. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. और उस स्टेज को हम बोलते हैं, एम्ब्रियो की स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे उसको. क्लियर? सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. ओके, where is that? Okay, so previous slide. Yeah, so you can see this is the so this is the opening of cervix. Okay, cervix part है ये, and then cervix it's opening into vaginal tube. So you can see vaginal tube is a 10 centimeter highly muscular tube. Okay, 10 centimeter tube which is highly muscular, and also it is highly glandular, right? And also highly vascular. Blood vessels भी काफी होते हैं इसमें. Highly muscular, highly glandular, highly vascular, 10 centimeter diameter length 10 centimeter. And यहाँ पे जो important structure है जो exam point of view से ये है कि the wall of vaginal tube has muscular projection. Muscular projections, you can see there are muscular projections. Okay, so these muscular projections are called rugae. Vaginal rugae important है.
vaginal rugi. So they provide friction, okay, friction to the copulatory organ penis, okay, so that so that is they help in copulation, okay, rugi, they provide friction. Now okay, so that is about vagina is also known as birth canal, because it helps in childbirth, and it is also known as copulatory canal because it helps in copulation, copulatory canal. So the important point about vaginal tube. And so this is about this. And the next part of the female reproductive system is external genitalia. External genitalia, okay, also known as vulva, okay, vulva, vulva, vulva. So ये जो बाहर जो आपको दो पार्ट दिखा रहे हैं, ओके, दीज आर फोल्ड, ये जो दो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हैं, ओके, वल्वा के पार्ट हैं. तो जब बाहर आउटर जो फोल्ड होता है, ओके, नीचे फोल्ड ऑफ स्किन, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और जो अंदर वाला जो फोल्ड होता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी. दिस इज क्लाइटोरिस, यू कैन सी फीमेल, इन फीमेल क्लाइटोरिस. तो आपने पढ़ा था, आपने तो फीमेल सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था, क्लाइटोरिस वहां पर होता है पेनिस, सॉरी वहां पर यानी जो होता है. तो क्लाइटोरिस जो होता है, सॉरी फीमेल में, सॉरी मेल में जो आपने देखा था वहाँ क्लाइटोरिस नहीं था. वहां पे क्लाइटोरिस की जगह क्या था, कॉर्पस स्पोंजियसम और कॉर्पोरा कार्नोसा, राइट. उनकी जो स्ट्रक्चर है, ओके, यानी क्लाइटोरिस केवल फीमेल में होता है, राइट. और ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मेल के इरेक्टाइल टिश्यू जैसी होती है, ओके. मेल के पेनिस में जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पोंजियसम जो होते हैं, उनके जैसी स्ट्रक्चर होती है क्लाइटोरिस की, राइट. So clitoris is a sensory structure, right. And clitoris के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्पोरा कैवर्नोसा, राइट. इसमें केवल कार्पोरा कैवर्नोसा होगा, इसमें कॉर्पस स्पोंजियसम नहीं होगा. कि अगर आप फीमेल मेल का अगर आपने टीएस और पेनिस देखा तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें दो कार्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, नीचे एक कॉर्पस स्पोंजियसम होता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्पस स्पोंजियसम नहीं होता है, राइट. यहाँ पे केवल कार्पोरा कैवर्नोसा का बना होता है क्लाइटोरिस, और कार्पोरा कैवर्नोसा सॉलिड होते हैं, राइट. मेल में उनमें लेक्यूना होते हैं, ब्लड फिल्ड स्पेसिस होते हैं, राइट, कार्पोरा कैवर्नोसा में, यहाँ पर नहीं होंगे. सो दे आर स्मॉल solid corpora cavernosa, and this structure is called clitoris, found only in female, right, clitoris. And clitoris के ऊपर एक यानी ये एक फोल्ड कवरिंग होती है, ओके, यानी उसको प्रिप्यूस बोलते हैं. जैसे मेल्स में था, ग्लांस पेनिस के ऊपर स्किन का एक फोल्ड था, उसको हम फोर स्किन बोला था हमने, फोर स्किन और प्रिप्यूस. तो ऐसा स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस के ऊपर भी होता है, फीमेल क्लाइटोरिस के ऊपर होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिप्यूस, ओके. इट्स ए फोल्ड ऑफ स्किन और क्लाइटोरिस, याद रखना है, ओके. प्रिप्यूस इज ए फोल्ड ऑफ स्किन और क्लाइटोरिस इन फीमेल. सो नाउ अब हम देखते हैं डिटेल में दिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा. तो ये जो these folds, okay, in detail, okay, they are part of genitalia. Let's see next. Okay, yeah. So this is the external female genital structures, okay, external female genitalia, also called vulva. Just 1 minute. Just what happened? Okay, I'm typing here. Just 1 minute. Clear, I'll try. So this is called vulva, vulva, or female genital, external genitals of female, right. So एनएस को छोड़ के बाकी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंटायर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, okay, this entire structure is called vulva or female genital externalia, okay. Now तो ये जो आपको दिख रहा है, okay, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एक
आउटर फोल्ड है, ओके, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा इज द आउटर फोल्ड ऑफ स्किन. दिस इज द फोल्ड ऑफ स्किन. और एक ऐसे इधर है, राइट. सो दिस इज थिक फोल्ड ऑफ स्किन हैविंग फैट्स इनसाइड. और इसके जो अंदर वाला जो स्किन फोल्ड होता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा is this one. Inner fold of skin is labia minora, and outer fold of skin is called labia majora, right. So labia majora जो होता है उसके जो बाहर वाला एरिया यहाँ पे, ओके, इट इज आल्सो हाईली थिक एंड फैटी. लिपिड स्टोर होता है इसके अंदर स्किन के नीचे. सो इट्स अ फैटी टिश्यू. उस एरिया को हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस. ये जो पूरा एरिया है जिसपे हेयर भी है, ओके, सो उसको होता है मॉन्स प्यूबिस. तो mons pubis is the thick fatty area, okay, and mons pubis is covered by hair called pubic hair. So these are pubic hair or mons pubis. Mons pubis के ऊपर ही है pubic hair, right. और तो एक तरह से mons pubis का जो अंदर वाला जो बाउंड्री है वो लेबिया मेजोरा हो जाता है, राइट. इस फोल्ड ऑफ स्किन. और उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि लेबिया मेजोरा जो है इट इज होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल. मेल के स्क्रोटम से होमोलोगस होता है लेबिया मेजोरा. और जो अंदर का जो फोल्ड होता है, ओके, लेबिया माइनोरा आप देख रहे हैं, ये ऊपर जाके ज्वाइन कर जाते हैं, ओके. लेबिया माइनोरा इधर वाला और लेबिया माइनोरा इधर वाला ऊपर जाके फ्यूज हो जाते हैं. दे ज्वाइन टुगेदर, फ्यूज, and they form clitoris. याद रखना है, ओके. क्लाइटोरिस कैसे बनता है? by fusion of labia minora on the anterior side, right. So that forms clitoris. और clitoris already बताते हमने, it's only in females. It is composed, it's a sensitive tissue and it is composed of corpora cavernosa. They are solid, okay, and not hollow, and they do not, clitoris does not have corpus spongiosum, right. So that's about important points about clitoris. और क्लाइटोरिस के ऊपर यानी स्किन का एक फोल्ड होता है. यू कैन सी दिस इज प्रीप्यूस और फोरस्किन. प्रीप्यूस और फोरस्किन, राइट. अब नीचे की तरफ भी ये जो लेबियम माइनोरा होता है ये नीचे की तरफ भी ये फ्यूज हो जाते हैं आपस में, राइट. फ्यूज हो जाता है, ओके. और उसको बोलते हैं फोरचेटी. यहाँ पे ये जो बन रहा है, ओके, इसको बोलेंगे फोरचेटी. टाइपिंग है फोरचेटी, ओके, इंपॉर्टेंट. तो ये फोरचेटी कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ लेबियम माइनोरा ऑन द पोस्टीरियर पार्ट, ओके. इसके अलावा ये जो नीचे दीज आर फोल्ड्स ऑफ स्किन, ओके. सो दीज फोल्ड्स, ओके, सो दिस एरिया, ओके, this area having skin folds, okay, that is called perineum, right. यानी एनएस के जो ये वाला फोरचेटी और एनएस के बीच का जो एरिया है इसको बोलेंगे हम पेरिनियम. Perineum. So that's the important points about this. And clitoris is homologous to penis of male, okay, ये भी याद रखना आपको. एंड इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर होती है जो जिसमें होमोलॉजी होती है मेल और फीमेल में. तो पहले मैंने बताया लेबिया मेजोरा इज होमोलॉगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल. दूसरा दिस क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल. थर्ड जो है वो ग्लैंड्स होती हैं, ओके. तो ग्लैंड्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके. और so that is about okay, now the next part is this okay, you can see लेबिया माइनोरा के अंदर जो एरिया है, जैसे लेबिया माइनोरा खुलता है तो इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल. VESTIBULE, वेस्टिब्यूल, राइट. तो वेस्टिब्यूल की जो वॉल होती है उसमें ऊपर की तरफ होती है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है यूरिन पास करने के लिए, राइट.
और वेस्टिब्यूल का नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें होती है ओपनिंग ऑफ वजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, राइट, वेजाइनल ओरिफिस, जस्ट ओरिफिस. And the opening of vagina is covered by a membranous flap that is called hymen. It's important. So hymen is a membranous flap, membranous covering, okay, that closes the opening of vagina, okay. And this hymen breaks at during first intercourse, sexual intercourse or coitus, right? But it's not necessary that it breaks only during first intercourse. It may break otherwise also, okay, like it may break due to any jerky movements, okay, like horse riding, okay, or like cycling, okay. uh, so presence of hymen is presence or absence of hymen is not an indicator of virginity, okay. And in some females, even after first coitus, uh, only some part of the hymen breaks, okay, and rest part remains there, okay. So I mean, so there is no relation between virginity and presence or absence of hymen, right? That is about female genital externalia. Okay, so now let's see the next part of female reproductive system, last part, and that is glands, right? So glands जो होती हैं, glands दो तरह की होती हैं फीमेल में, बेसिकली तीन तरह की होती हैं. तो यहाँ पर दो तरह की होती हैं. तो पहली जो यहाँ पर होती है वो होती है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, पैरा यूरिथ्रल glands, also known as Skin's glands. Skin's name of the scientist, Skin's glands. Function: they produce mucus for lubrication during sexual intercourse or coitus, right? Now, so they are yeah. Next gland in female is Bartholin's glands. Bartholin's glands. Okay, so Bartholin's glands, right? They produce alkaline secretion. Alkaline secretion, I told you in the male also, okay, it neutralizes the acidity of urine. यहाँ पे जो urine कुछ इकट्ठा हो सकता है, okay, it may damage the sperms or eggs, okay, sorry, the sperms and gametes. So it produces alkaline secretion, and so it will neutralize the acidity of urine. इसके अलावा it also provides, you know, fluidity, mobility medium to the, you know, the sperms. So that is so there are numerous parietal glands, okay, sorry, Bartholin glands are there and parietal glands are there, and their function. Now, parietal glands of females are homologous to prostate gland of male. ये भी याद रखना important point है. Parietal glands are homologous to prostate gland, and Bartholin glands of female are homologous to bulbourethral glands or Copper's gland of male. The Bartholin glands are homologous to bulbourethral glands मेल्स में होती हैं. bulbourethral glands का दूसरा नाम क्या था? Copper's gland, right? So they are homologous. Bartholin glands of female are homologous to bulbourethral glands or Copper's glands of male. So that is homology in male and female reproductive system. Okay, so that is about the glands found here, right? Now let's see about so these glands are found in the vestibule, right? And so parietal glands are found here in the area around this, okay, near urethra, and Bartholin's Skin's glands are elsewhere, okay. So that's out. Now next is
third gland is called mammary gland. Okay, mammary gland are also known as breasts in female. So now we'll discuss last part of female reproductive system, and that is mammary glands. So let's see slide number, I think. Yeah. Okay. So this is the section of the mammary gland, lactating mammary gland. So mammary glands are found in males also, but in males the mammary glands are inactive, rudimentary, okay, dormant. They do not produce milk, right? But in females they are active. Okay. And so the mammary glands, you can see in the section, the mammary gland is composed of, so there is basically there is a connective tissue filled inside the mammary gland. Okay, so this connective tissue, entire connected, इसी connected tissue में बहुत सारी structure रखी होती है. All these structures are present in the connective tissue of the mammary gland. तो ये जो connective tissue के parts होते हैं, इसके parts बने होते हैं. Okay, this is one part, this second part. Okay, so these chamber like यानी parts बने होते हैं. Okay, so these chamber like partitions जो होते हैं, these chamber like partitions are called lobes. Okay, lobes. So mammary glands are composed of lobes. 15 से 25 lobes होते हैं, right? 15 to 25 lobes होते हैं in each mammary gland, in each breast. So these lobes are nothing but they are partitions of the connective tissue of the breast. So you can see connective tissue partition here. Okay, this is the okay. So chambers, okay, chamber हो गया, and तो हम उसके बाद में आएंगे. तो जो पार्टीशन, तो दिस लोब, बेसिकली दिस लोब, सपोज दिस इज लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड. तो इस लोब के अंदर क्या होगा, इसके अंदर लोब्यूल्स मिलेंगे आपको. दिस इज ए लोब्यूल. एंटायर चैम्बर. ओके, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड लोब. और लोब के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर क्या पड़ा है, आपके देख रहे हैं ये जो पिंकी स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड, यू कैन सी यहाँ पे लोब्यूल्स बोलेंगे. दिस द लोब्यूल. जैसे ये दूसरा चैम्बर है, इसमें देखो ये लोब्यूल पड़े हुए हैं, ये लोब्यूल है, एक ये लोब्यूल है, ये पिंकिश लोब्यूल्स, लोब्यूल्स. तो लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, राइट? लोब्स आर पार्ट्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, और लोब्स के अंदर लोब्यूल्स पड़े होते हैं, राइट? और लोब्यूल्स, okay, तो लोब्यूल्स बेसिकली दे आर ग्रेप लाइक, इट्स अ काइंड ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स. से ग्रेप्स का जैसे गुच्छा होता है, उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं. ओके, ऐसे देख रहे हैं आप यहाँ पे. तो ये बहुत सारे यानी ग्रेप्स होते हैं, यानी सी वन लोब्यूल, सेकंड लोब्यूल, थर्ड लोब्यूल. तो एक ही बंच में बहुत सारे लोब्यूल्स यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, राइट? सो वेल, ओके, तो लोब्यूल्स होते हैं. ओके, सो जस्ट लाइक लोब्यूल्स. ओके, तो ये मान लो कि ग्रेप्स का गुच्छा है, लोब्यूल्स यानी लॉब्स है. लॉब एक चैम्बर है, उस चैम्बर में ग्रेप्स का एक गुच्छा पड़ा हुआ है, बंच पड़ा हुआ है ग्रेप्स का, राइट? और उस बंच को हम बोलेंगे लोब्यूल, राइट? और लोब्यूल, ये जो लोब्यूल है उसमें, ये जो लोब्यूल है उसमें हर जो ग्रेप होता है उसको, उसका एक नाम है, उसको बोलेंगे एल्वियोलस. ओके, एल्वियोलस मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, इट्स इंपॉर्टेंट, एल्वियोलस. ओके, ओके, एल्वियोलस. तो ये एल्वियोलस है बेसिकली, इसने यहाँ पे थोड़ा अजीब दिखाया हुआ है. यहाँ पे ये एल्वियोलस हैं, ये जो ग्रेप्स, ईच इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एल्वियोलस. ओके, लोब्यूल के अंदर यानी ईच लोब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी एल्वियोलाई. एल्वियोलाई प्लूरल होता है, एल्वियोलस सिंगुलर होता है. ओके, सो एल्वियोलाई. सो लोब्स के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, और लोब्यूल जो होते हैं वो एल्वियोलाई के बने होते हैं. लोब्यूल्स यानी bunch of grapes, each grape is similar to alveolus,
यानी एल्यूलस एक ग्रेप की तरह है। ओके, तो ये आपके एल्यूलाई होंगे। और जब एल्यूलाई को हम काट के देखेंगे तो ये एक होलो स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल होलो स्ट्रक्चर होती है, और उस होलो स्ट्रक्चर की जो वॉल होती है उसमें एक एपिथेलियम होता है जो मिल्क सीक्रेट करता है। ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, राइट। यानी जो एल्यूलस की जो वॉल होती है दैट इज ग्लैंडुलर, इट हैज ग्लैंड्स, these glands produce milk, these gland cells produce milk। यानी एल्यूलस की जो लाइनिंग होती है उसमें ग्लैंड सेल्स होती है, these gland cells produce milk, right? So एल्यूलस secretes milk, it will produce milk, right? तो ये जो ग्रेप्स का जो बंच है, ओके, इसकी यूनिट, हर यूनिट जो है जो हम जिसको ग्रेप बोल रहे हैं, ये इसको हम एल्यूलस मान रहे हैं, राइट। सो दे आर एल्यूलस, सो देयर आर सो मेनी एल्यूलाई इन ए लोब्यूल। क्लियर, याद रखना आपको, लोब्स पार्टीशंस होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उसमें लोब्यूल्स जुड़े होते हैं। लोब्यूल्स इज ए काइंड ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स, ओके, इट्स अ बंच ऑफ, लोब्यूल इज a bunch of alveoli, each alveoli is similar to grape, okay, so and wall of alveoli is having gland cells, those gland cells produce milk। now next part, so ये तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो एल्यूलस से मिल्क बन जाता है। उसके बाद वो छोटे छोटे डक्ट्स के थ्रू, ये जो छोटे डक्ट है उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये छोटे छोटे मेमोरी ट्यूब्यूल है बहुत सारे, इवन ये छोटे छोटे मेमोरी ट्यूब्यूल हैं। तो मेमोरी ट्यूब्यूल में आ जाता है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में ज्वाइन कर जाते हैं एक बड़ी डक्ट को, या बड़ी डक्ट में ज्वाइन कर जा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे मेमोरी डक्ट, ओके। एंड ओके, let me see, let me show some certain structures next, just 1 minute। तो जैसे आपने देखा, तो ये जो ये लोब्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है, लोब्यूल, और ये आपका डक्ट्स हैं आपकी, राइट, ये डक्ट्स हैं, ये बाहर की तरफ खुल रही है। और ये जो डक्ट्स होती है बेसिकली, इसमें इसने नहीं दिखाया, तो नो इशू, ओके। सो memory tubules open into memory, these lactiferous ducts, you can see these are lactiferous duct, right, lactiferous duct होती है, और lactiferous duct, ओके, ये वाली, ओके। उसके बाद lactiferous duct क्या करती है, आगे जाके थोड़ी मोटी हो जाती है, it becomes dilated, that part is called ampulla और lactiferous sinus, इसका lactiferous sinus और ampulla, राइट। ये आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो lactiferous sinus is called ampulla, memory ampulla, okay। तो पहले, सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखनी है, सबसे पहले अंदर से शुरुआत करते हैं, एल्यूलस से निकलते हैं छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, उसको होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स फिर जो है ज्वाइन, मेमोरी ट्यूब्यूल छोटे रहे, फिर ज्वाइन करते हैं लैक्टिफरस डक्ट से, ज्वाइन करेंगे, लैक्टिफरस डक्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, लैक्टिफरस डक्ट है ये, लैक्टिफरस डक्ट फिर ज्वाइन करेगी लैक्टिफरस साइनस से, लैक्टिफरस साइनस को एम्पुला भी बोलते हैं, ठीक है। देयर लैक्टिफरस साइनस क्या करता है, मिल्क स्टोर करते हैं, टेम्पररीली मिल्क स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए उनको लैक्टिफरस साइनस बोलते हैं और एम्पुला बोलते हैं। उसके बाद एम्पुला के बाद आखिरी का जो पार्ट है इस डक्ट का, उसको बोलेंगे मेमोरी डक्ट, राइट, मेमोरी डक्ट। एंड मेमोरी डक्ट्स ओपन इनटू, दे ओपन at the tip of the breast, that is called nipple, tip is called nipple। तो 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 each memory lobe has a independent opening outside, okay। तो जैसे मैंने बताया था कि 15 से 25 मेमोरी लॉब्स होते हैं, तो इसलिए द टिप ऑफ द ब्रेस्ट निपल हैज ओपनिंग्स, देयर नंबर इज
15 to 25. ओके, जितना लॉब्स का नंबर है, जितना ही नंबर ओपनिंग्स का होगा, राइट. सो दैट इंडिपेंडेंट माइन्यूट ओपनिंग्स 15 to 25 नंबर एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट एट द निपल, राइट. सो दैट इज, तो आप यहाँ पे सीक्वेंस याद रखनी है, राइट. वेरियस काइंड्स ऑफ डक्ट्स थी, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ. मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ओके, लैक्टिवरस डक्ट, लैक्टिवरस साइनस, देन लैक्टिवरस साइनस के बाद मेमोरी डक्ट्स, ओके. और उसके बाद जो है ये एट दे ओपन इंडिपेंडेंटली एट द टिप ऑफ दिस. और इसके अलावा निपल के आसपास का एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज पिगमेंटेड एरिया. उस पिगमेंटेड एरिया को हम बोलेंगे एरियोला. एरियोला has glands, sebaceous glands, okay, they are called areolar glands. They produce sebum, okay, oily secretion. And so इसके अलावा you can see there are other certain structures. You can see these are certain suspensory ligaments also, okay. So suspensory ligaments, they hold the breast in place, okay, so that it does not hang down and maintains in shape, okay. सस्पेंसिव लिगामेंट के अलावा और क्या होगा, फैट होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ फैट, यू कैन सी येलो कलर्ड पार्ट इज फैट, लिपिड्स होता है ब्रेस्ट में, लॉट्स ऑफ लिपिड्स. एंड द अमाउंट ऑफ लिपिड्स वेरी फ्रॉम एज टू एज, okay, and size of the sorry, amount of lipids also determine the size of the breast. So that is the various structures of the female mammary gland, okay. So ये हमने आपको बता दिया. एंड नाउ लेट्स सी सम अदर पार्ट्स इन दिस. तो यहाँ पे मसल्स होती हैं, स्पेशल मसल्स होती हैं, ओके. इनको पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं, ओके. पेक्टोरल मसल्स होते हैं, और कुछ इंटरकोस्टल मसल होते हैं यहाँ पे, और ये रिब्स से आपको दिखा दी रही सेक्शन में. लेट्स, और जो एल्वियोलस के अंदर जो एपिथेलियम होता है, उसमें जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स, ओके. दैट इज अबाउट mammary gland in detail. So that's about today's topic. We have covered it, okay. So we have covered the important parts which are taught in professional coaching institutes, okay, जहाँ पे बच्चे लाख रुपए दे के पढ़ते हैं, राइट. और हम भी लाखों में पैकेज लेते हैं वहाँ पे, राइट. एंड believe me, I have covered the most majority of the important points related to female reproductive system. So just focus on the, so we have covered all this. So that's all, okay. Have a good day. Thank you.